Welcome to Ada 247 OPSC. SK Rout here. आज आम आरंभ करवा प्रिलिम रो गोटे रिवाइज सेशन आम आरंभ कर काली कही तो आज आम रिवाइज सेशन आरंभ करिया चैप्टर वाइज किछि देखिबा तापरे रिवीजन गुरा देखिबा गुड आफ्टरनून सॉरी फॉर बीइंग लेट ओके सो टिके लेट ही आम सेशन आरंभ करदबा आज अच्छी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सन कौन फंडामेंटल राइट्स ठीक अच्छे तो पिलाना आम रिवाइज करबा एटा प्रिलिम पे आम रिवाइज करूचे सब जिनस गुरा सॉरी प्रिलिम पे आम रिवाइज करूचे सब जिनस गुरा सब तेणु बेसिकली बाकी प्रिलिम सहित भी यहाँ मेन है कौन मेन है तुम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हम तेणु जो मैंने भी सिविल एस्पिरेंट अच्छ ओपीएससी हो यूपीएससी हो प्लीज वॉच आवर सेशंस यहाँ भलसे देख बहुत सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें पाई परिबो कॉन्सेप्ट गुरा तुम क्लियर हम एवं भास्टनेस बढ़िबो वाइडर स्कोप उपरे तुम्हें कब्जा करि परिबो एवं तापरे एलिजिबल बा कोन एनाबल्ड हम to write the papers ठीक अच्छे so please watch our sessions on ADA 247 OPSC we are bringing not only the questions खाली क्वेश्चन आमे आनुने आमे कॉन्सेप्ट वाइज इन डेप्थ आलोचना करूचे कारण सिविल सर्विस रो मेन कथा हला हमकु बुझिबार अछि सब जिंस इन डेप्थ बा गोटे क्लियर कट हमकु ताकू जानिबार अछि सेटा हला हमर मेजर जिंस सेति पई समस्ते जो मैंने भी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट अच्छो बा सिविल सर्विस एस्पिरेंट अच्छो कि हमर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब गुरा एस्पिरेंट अच्छो एसएससी हो बैंकिंग हो से माने समस्त गुरा देखिबा कथा कारण एथिरे हमें केवल क्वेश्चन सह विभिन्न प्रकार कोन ठीक अच्छे ओके तो दैट इज देयर सो आज आरंभ करे पिला माने प्रिलिम तो 1 तारिख रे हबो डिसेंबर 1 तारिख रे तो ऑलरेडी टेंटेटिव डेट डिक्लेयर हेच बदे नै कि तो सेति पे रेडी रहो बाकी जो माने क्लास स्टार्ट करिया को चाहू छ हमर ADA 247 रो जो वॉरियर बैच अछि सेतरे बहुत सारा पिला जॉइन कलेनी तुमे भी सेतरे जॉइन करि जाओ बहुत कम पैसा रे हमें सिविल सर्विस रो बेस्ट क्वालिटी कोचिंग पाई परिबा वी आर हियर ठीक है आरंभ करबा आज देरी करबानी क्वेश्चंस So, fundamental rights. Fundamental rights are core part of a democracy. यदि हमें गणतंत्र कहूचे गणतंत्र रो बा लिबरल डेमोक्रेसी जो हमें कहूचे rights of individuals are a core part of democracy, liberal democracy. एवं rights टा जो लोकमानकर जो अधिकार टा सेटा होची संविधान रो constitutional morality रो जो संवैधानिक नैतिकता रही तार गोटे मुख्य अंग है कौन मुख्य पार्ट है अंश है राइट्स जदि गोटे देश रे लोक मानकु राइट्स दिया जाउनी जदि लोक मानकर इंडिविजुअल राइट्स नहीं राइट टू लिव राइट टू लाइफ राइट टू फूड राइट टू हेल्थ राइट टू एजुकेशन राइट टू सोशल जस्टिस राइट टू फ्री ट्रायल जदि बेसिक राइट्स गुरा गोटे लोकर नाही तारे से डेमोक्रेसी रो कोनोसी माने डेमोक्रेसी रो संज्ञा खोजिबा से देश रे डेमोक्रेसी रो संज्ञा खोजिबा ए माने जेमती आमे कहिबा मरुभूमि रे पानी खोजिबा सदृश तेनु फंडामेंटल राइट्स आर लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाए लिबरल डेमोक्रेसी रो जीवन रेखा है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आउ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज करी जो 6 प्रकार फंडामेंटल राइट्स आम देश रे रही आम संविधान रे रही जो 6टी संविधान रे रही माने मानवीय अधिकार बा मनुष्यर सबु मनुष्यर गोटे जन्मगत अधिकार इटा सबु मनुष्यर जन्मगत अधिकार जो संविधान रे जो राइट्स गुरा रही एटा संविधान रे केही काकू माने कोनोसी संविधान किछि बा सरकार तांकू लोकन को किछि गोटे दया करूनी एटा गणतंत्र रे बा डेमोक्रेटिक कंट्री रे सबु मनुष्यर एतिकी अधिकार रहिबा दरकार ताटू अधिक अधिकार भी रहिबा दरकार
तेणु जितेबाला यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो यूडीएचआर अच्छी यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिसेम्बर 10 तारिख 1948 मसीह जातिसंघ मानवर जो जन्मगत बा मौलिक अधिकार उपरे गोटे घोषणानामा करथिला से घोषणानामा होची मानव इतिहास बा मानव अधिकार इतिहास एक नूतन चैप्टर ओपन करथिला ठीक अच्छे से जो फंडामेंटल राइट्स को बा से जो ह्यूमन राइट्स गुडी को आम देशर संविधान रे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर रे लिखा जाई फंडामेंटल राइट्स चैप्टर्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज आर्टिकल्स 12 to 35 ठीक है पिलाने एटा इंट्रोडक्शन गोटे कहीदेली तुमको जो माने नुआ देखुथिबो फंडामेंटल राइट्स उपरे बाकी हमें डिटेल्स हमरो जो डिफरेंट क्लासेस अछि सेतरे जॉइन करले तुमे डिफरेंट कांसेप्ट पाई परिबो और इलाबोरेट डिस्कशन हे परि आरंभ करबा हमें क्वेश्चंस को फंडामेंटल राइट्स उपरे ओके राइट्स फंडामेंटल राइट्स उपरे आरंभ करबा Look at the questions. Look at the question. We'll discuss few questions today. Can you see all of you the questions? Pranam Rinki. Good evening Rohil. All of you, good evening to all of you. Very good evening to all of you. Okay. The question dekho pilane question kemti achi dekho. In India, consider the following statement. In India, the right of witness to testify freely the courts is a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. The Malimat Committee report is associated with the recommendation of a witness protection scheme. BS Malimat Committee was constituted in 2004. ठीक है पिलाने basic idea किसी अच्छी आप रहे anyone can answer who can answer the question ज्योति good evening ज्योति विंसी ना गुरा सब लेख रे ना गुरा तुम्हारा प्रॉपर ना डी लेख मुझे देखे तुम्हारा ना गुरा सब से सब कौन कौन कोड वर्ड रे ना लिखी चे मुझे ते मन रखी पानी ठीक है okay okay very good for coming and joining my classes every day at 5 PM ठीक है ताले कौन करिया देखो पिलाने राइट ऑफ विटनेस टू टेस्टिफाई फ्रीली इन कोर्ट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 पिलाने आर्टिकल 21 रे इम्प्लिसिट सेटा सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दिस राइट तेणु सेटा 21 रे गोटे इम्प्लिसिट राइट इम्प्लिसिट तेणु एठी तो सी इम्प्लिसिट की एक्सप्लिसिट लिखिनी तेणु एटा ठीक है राइट ऑफ विटनेस माने कौन साक्षी टू टेस्टिफाई अर्थात जो प्रमाण जो विटनेस हम जो दब साक्षी प्रमाण दब फ्रीली माने कौन विदाउट फियर विदाउट कौन कंपल्सन अबाधरे निर्भय से साक्षी दब क्या डरबनी से गोटे फंडामेंटल राइट बोली सुप्रीम कोर्ट कहते एंड यू नो कि राइट आर्टिकल 21 सबुठारु मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबुठारु अधिक आलोचित एवं सबुठारु अधिक वर्णित होइतिबा धारा होची आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो कुआ जाई पिलाने राइट टू लाइफ एटा मनुष्यर जीवन बुझीपार राइट टू लाइफ कहले आम गोटे कनसेप्ट तो बुझे दूसरी समय अच्छी आम क्वेश्चन तो देखा बहुत देखुचे एमती शह शह क्वेश्चन आम देखा जेपर्यंत आम लक्ष्य स्थल में न पहुँचे से पर्यंत आडा 247 ओपीएससी आम मैंने तुम सहित एमती भाव में डिफरेंट क्वेश्चन आणिक रहा कि आज देखा राइट टू लाइफ जो कथाटा कहूँ आर्टिकल 21 रे दीटा राइट्स अच्छी पिलाने गोटे राइट टू लाइफ आ गोटे राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये जो राइट टू लाइफ कहुई यहाँ सुप्रीम कोर्ट का अनुसार हूँ मानवर अधिकार गोटे मनीष खाली बंचिले हेनी जदि इफ ए मैन इज स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ हैविंग नो रूफ ओवर हिज हेड एंड नो फूड नो क्लॉथ ऑन हिज बॉडी मो कथा बुझीपार ना जदि गोटे मनीष खाली फुटपाथ उपर शोची किंतु ता पाखरे घर नहीं ता देहरे गोटे भल वस्त्र नहीं ताकू गंडे खाइया से कहीं देवाकू नहीं ताले
से मनीष कौन सतरे राइट टू लाइफ अधिकार पाई सतरे कौन से मनीषर राइट टू लाइफ अच्छी नो कारण एठी जो राइट टू लाइफ कथा कहई संविधान रे सेटा गोटे सुस्थ सामाजिक मनीषर जीवन कथा कहई गोटे सुस्थ सामाजिक मनीष जीवन यापन करिया को खाली जीवन धारण करने दरकार नहीं मनीष गोटे एनिमल भी जीवन धरिकी बसुची गोटे गोटे डग हो गोटे कैट हो गोटे रास्तार बुलूची बुला कुकुर है तार भी जीवन अच्छी तार मनीषर जो जीवन कथा कहई राइट टू लाइफ केतबेले आसो जितेबाला गोटे मनीष पाखे बेसिक नीड्स गुरा स्वास्थ्य शिक्षा खाइबा पीबा रहिबा गोटे मुंड उपर गोटे घर रूफ ओवर हिज हेड एटलिस्ट 2 meals ए डे किछि बॉडी को आच्छादन करिया पई क्लोथेस पई तार रहिबो एवं तार ई जो स्टैंडर्ड लाइफ जेतेबेले आसीबो एवं से सोशल जस्टिस पाउतिबो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे से कंफर्टेबल फील करूतिबो ही हैज ए राइट टू सोशल जस्टिस तार सेतेबेले आमे कहिबा जे 21 प्रकृति राइट टू लाइफ अच्छी बोली तेणु से दिन को दिन जिते समय बदलुची सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 अंडर रे डिफरेंट आर्टिकल डिफरेंट राइट ऐड कर तुम मैंने देखि 2017 के पुटास्वामी केस रे सुप्रीम कोर्ट कहले राइट टू प्राइवेसी भी गोटे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 अबाउट 45 राइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन राइट टू आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 रे 40 रु अधिक बेली धरिने 40 रु अधिक अधिकार से इनक्लूड कराई कारण जीवन को बंचिया जहाँ जहाँ बेसिक जिनस दरकार समय अनुसार से बदलुची तेणु से भी गोटे राइट टू कौन राइट ऑफ विटनेस टू टेस्टिफाई फ्रीली एवं पिलाने एटा VS मालिमत कमिटी एटा रिपोर्ट देइथिले VS मालिमत कमिटी क्रिमिनल जस्टिस ओवरहाउलिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पई बसिथिला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमर अच्छी इंडियन जोटा भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय साक्ष्य संहिता ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुंखानुपुंख भाव में स्टडी करी कौन कौन परिवर्तन से आसीपर से VS मालिमत को नेतृत्व में कर्नाटक मुख्य जो विचारपति थे मुख्य हाईकोर्ट मुख्य विचारपति थे जस्टिस VS मालिमत को नेतृत्व में सरकार गोटे कमिटी बसई सी रेकमेंड करते सी ठीक अच्छे तेणु यहाँ भी ठीक अच्छे किंतु VS मालिमत कमिटी 2000 मसीह गठन होता 2004 इनु बुझीगला ताले कौन हम आंसर कह 1 and 2 इटा कौन रे इटा 1 and 2 हम आंसर हला ए गोटे क्वेश्चन भी बुझू किंतु गोटे क्वेश्चन जदि बुझी गलु सेतिरु 1000टा कांसेप्ट तू पाई गलु पुळे पुळे क्वेश्चन खाली जो यूट्यूबर माने जो डिस्कशन करूछंती OCS ना नहीं कि सिविल रो ओरिजिनलिटी जानिबार अछि सिविल जे देइथिबो सिविल जे पाइथिबो से ही तुम जे प्रकृत सिविल सर्विस रो सिलेबस सहित उत्तप्रत भाव में जड़ित थिबो से ही क्वेश्चन रो डायमेंशन बुझेई परिबो निजे बुझी परिबो तेणु ये जो सो कॉल्ड जो यूट्यूबर सिविल सर्विस ना रे भिन्न भिन्न चैनल जो प्रकार सस्ता कोचिंग आनिकी तुमको जो विमोहित करुचंती विमोहन विद्या रे जो रखुचंती हिप्नोटाइज करुचंती सेतिरे जमा भଳି जीवनी ओरिजिनल क्वेश्चन को आसो तल दिमाग गरम हे जीवो जानि परिबो जे प्रकृति रे मु सिविल सर्विस को कोठी छाडी के आस्तेली पछरे ठीक है आसीबा आरम नेक्स्ट क्वेश्चन को 4-5टा जिनस हम तुम्हें पाइल VS मालिमत कमिटी कौन पाई तैयारी होइतिला VS मालिमत कमिटी रो कौन विशेषत्व थिला केबे होइतिला VS मालिमत को हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस थिले एवं कौन पाई बसतिला एवं से कौन रेकमेंड करतिला कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 with reference to the appropriation bill consider the following statements
with reference to the appropriation bill. Who can answer, state the answer? Okay, okay. चलो क्या आंसर होगा? यस आंसर आसीगलानी 2003 कोटा 2003 ज्योति प्रकाश कोटा 2003 कहूँ मालिमत कमिटी 2003 रे रिपोर्ट देछे. अच्छा with reference to appropriation bill it enables the government to withdraw the funds from the consolidated fund of India. এটা ঠিক আছে. No money can be sanctioned from the consolidated fund of India without passing an appropriation act. गोटे appropriation act pass न होले पार्लियामेंट रो गोटे appropriation bill pass न होले consolidated fund रू पैसा उठी परिबनी. No money one on okay that is a constitutional provision. That is a constitutional provision. Say like that is a constitutional provision under Article 113 appropriation bill. Then it is mandatory for the government to accept the recommendation of the Rajya Sabha, not necessary. As you know, money matter re Rajya Sabha does not have any substantial authority. The one only. A appropriation bill पास हेले पैसा सरकार पाखक आसे तेणु कौन सी पैसा कंसोलिडेटर उठी पारिबो नहीं विदाउट एप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है. इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. रिमेंबर इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को The freedom of press under Article 19 of Indian Constitution is restricted on which of the following grounds? Yes, Mahi, you are right. Yes. Okay. The freedom of press under Article 19 of Indian Constitution is restricted on which of the following grounds? Sovereignty and integrity of India, contempt of court, defamation, incitement to an offence. Plan Article 19 रे केतेटा आर्टिकल अछि 1 रे A B C D E F नहीं G बुझी परछ त 6टा अछि. ए रे धरो एला स्पीच, बी रे एला कोन असेंबली, सी रे एला एसोसिएशन, डी रे एला मूवमेंट, ई रे एला रेसिडेंस, जी रे एला ऑक्युपेशन. सामरो कहे त 1 रो एफटा अबोलिश हे छि. एफटा राइट टू फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी टा अबोलिश हे छि. बाकी आर्टिकल 19(2) रे रेस्ट्रिक्शंस अछि. को ग्राउंड रे गुरा रेस्ट्रिक्ट हेबे. क्लॉज 1 रे रहिला फ्रीडम गुरा, 2 रे रहिला फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच कोथरे रेस्ट्रिक्शन हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच टा एटा कोथरे रेस्ट्रिक्शन हो. एटा 2 रे अछि एवं सेति पे 8टा ग्राउंड अछि. तादरु 4टा ग्राउंड अछि. सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी माने कोन देशर सार्वभौमत्व आउ संहति रक्षा करिबा. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माने कोन अदालत अवमानना करिबा. आ डिफेमेशन माने कोन निंदा करिबा, कुछ का निंदा डिफेमेशंस. इनसाइटमेंट टू ऑफेंस माने क्राइम करिया पे उसकेबा बा इंस्टिगेट करिबा. जो 114 यस 113 114 मुसेटा डी कंफ्यूजन. ठीक है बढ़िया कथा. यस ज्योति प्रकाश यू आर राइट.
सो सेटा डिटेली तो एटा हला डिफेमेशन त माने 1 2 3 4 हबो बाकी अन्य ग्राउंड भी अच्छी अन्य ग्राउंड भी रही सॉवरेन टेरिटरी अच्छी सिक्योरिटी ऑफ द नेशन फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज एंड सब अन्य ग्राउंड भी अच्छी ठीक अच्छे वन ठीक अच्छे दीज आर द टाइम्स 1 2 3 आंसर हम डी एटा एगुरा सब 19 रे मेंशन अछि ओके 19 रे मेंशन अछि नेक्स्ट आसीबा consider the following statement the writ of mandamus is available not only against judicial authorities but also against administrative authorities. The writ of prohibition is issued only against judicial or quasi-judicial authorities. Which of the following is correct? Quote correct of mandamus. Yes, please answer the question. क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर? Yes. Yes. mandamus can be এটা ঠিক আছে পিলাने judicial inferior court government tribunals এগুলো উপরে भी আসি परिबो mandamus as a negligence of duty it is a negative writ when any government official government authorities does not perform their official duties it is issued against them mandamus we command তার অর্থ হচ্ছে we command. So that is correct. The writ of prohibition is issued only against judicial and court. Writ of prohibition is not issued against administrative authorities. Therefore, both of the statement are correct. C. Writs are issued by Supreme Court and High Court under Article 32 and 226 respectively. Therefore, they are very important writs. ତେଣୁ ଏଇଟା ଉପରେ ଲର୍ନ କରିବ ଦେର୍ ଆର୍ 5 କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ରିଟ୍ସ ହାବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ମାଣ୍ଡାମସ୍ କୋ ୱାରଣ୍ଟୋ ନାଇକି ହାବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ରିଟ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋ ୱାରଣ୍ଟୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ମିନିଂ ଅଛି ମିନିଂ ଗୁରା ବି ଟିକେ ଦେଖିବ କୋ ୱାରଣ୍ଟୋ out of the prohibition out of the certiorari these are the 5 kinds of writs that are issued okay habeas corpus mandamus the tapati also dekhiyo writs are issued by Supreme Court and High Court, but remember the power to confer writ powers. Writ powers are can be conferred on other courts by the Parliament. Okay, so under Article 32 and under Article 226 there is a provision, but Parliament can confer writ power on other courts like inferior courts if Parliament passes an act on this, but so far no act has been enacted both. Okay, so that is C. Next is here 4. As far as the armed forces of the concern, the fundamental rights guaranteed under Article 14 and 19 of the Constitution. Plan Article 33 re restrictions for the and for fundamental restriction for enjoyment of fundamental rights for the armed forces are mentioned. Article 33 re restrictions on fundamental rights for members of armed forces, paramilitary forces and analogous services ଉପରେ restriction ଅଛି କାରଣ ଏମାନେ ଦେଶର discipline ବା security charge ରେ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ they are not normal human beings they do not live life
like on normal human beings they have to be very much sensitive about the security of the nation, so they have certain responsibilities towards the nation, towards the protection of the nation. ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଏ। ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତାରି ଉପରେ ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ 14 जो अच्छी राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सेटा आर्टिकल 32 रो 1 2 3 4 अच्छा हो कह देबी। एज फार एज द आर्म फोर्सेस आर कंसर्न द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर कौन हम अवेलेबल टू द आर्म फोर्सेस नॉट अवेलेबल एट ऑल, सेमती कहि परिबानी, अवेलेबल हुए ठीक अच्छे किंतु रेस्ट्रिक्शन रहे सीटा से कौच। अवेलेबल टू द आर्म फोर्सेस नो, नॉट अदर फोर्सेस एटा भी हबनी। अवेलेबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नो, अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पार्लियामेंट डी। बुझी पारछ तो जो मिलिटरी हैला, डिफेंस हैला कि पैरामिलिटरी फोर्स रे जो माने सर्विस करंती तांकू फंडामेंटल राइट्स मिले। जदि दरकार हम तांको पे रेस्ट्रिक्शन ताले पार्लियामेंट एक्ट करिवो। सेति पार्लियामेंट आर्मी एक्ट करची 1950 मसीह रे, एयर फोर्स एक्ट करिची, नाभाल एक्ट हेची, विभिन्न प्रकार आर्मर्ड फोर्सेस एक्ट सब तैयारी करा होची। कारण से माने साधारण लोक भली कौन जो स्वाधीनता जर फ्रीडम ऑफ स्पीच हैला, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हैला, से मानकर रेस्ट्रिक्शन थाए, रेस्ट्रिक्शन सस्पेंशन बुझे कि नहीं, सेटा होची तेणु आंसर हम डी। नेक्स्ट आसीबा हमें नेक्स्ट आसीबा 6 नंबर क्वेश्चन। लुक एट द 6 क्वेश्चन पार्ट 2 रो। Which of the following statements are true with regards to the fundamental rights of minorities educational matters? कोटा ठीक अच्छी माइनॉरिटी मानकर कोटा ठीक अच्छी। Okay, so which of the following true with regards to fundamental rights of the minority has only the right to administer the educational institution. The minority has the right to establish and administer. बुझिपारछु क्वेश्चन टा बुझिपारछु ना नहीं मते कह, क्वेश्चन गुरा बुझिबा दरकार। एथरे कोन कहूची ऑप्शन 1 रे कहूची जे माइनॉरिटी माने केवल तांकर शिक्षा अनुष्ठान गुडिक परिचालना करि परिबे। एथरे कहूची माइनॉरिटी माने एटी को माइनॉरिटी कथा कहूची रिलीजियस माइनॉरिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन रे केते प्रकार माइनॉरिटी कथा विचार कराइची, दुई प्रकार, गोटे धर्मीय माइनॉरिटी आउटेला लिंग्विस्टिक भाषागत। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आउटे रिलीजियस माइनॉरिटी, दी प्रकार कथा मेंशन करा बा ये कराइची इम्प्लाइड कराइची। तो यहाँ आम रिलीजियस माइनॉरिटी कथा कहूँ जो कौन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कथा कहूँ। एमाने बोथ एडमिनिस्टर आउ एस्टाब्लिश कर परिए, बोथ एडमिनिस्टर एंड एस्टाब्लिश। तमाने एटा भूल अछि। द राइट इज अवेलेबल एब्सोल्यूट एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी रेस्ट्रिक्शन, एटा भूल हम। नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन। बुझी पारछ ना नहीं, तेना एब्सोल्यूट असले कोन हे जिवो, एब्सोल्यूट ले कोन हे जिवो लेसेस फेयर हे जिवो, माने इंडिविजुअलिज्म आस जिवो, ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी बढ़ी जिवो, अनार्की पळे आसीबो। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन। काहे कि रेस्ट्रिक्शन करा जाय, कारण व्यक्तिर अधिकार, व्यक्तिर स्वार्थ आ सामूहिक स्वार्थ भितरे कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट मध्य बैलेंस आना जाए। बैलेंस आनिले कौन हम ना सेटा सबू जस्टिफाई करिवो। तेणु एटा केवल टू ओनली। देखिए आंसर कौन अच्छी आर्टिकल 30 कथा से कहूँ, एटा को आर्टिकल 30
अच्छा आउट अच्छी reasonable restrictions may be imposed to promote efficiency and yes तेणु reasonable restriction reasonable माने appropriate article 30 जो अच्छी article 30 रे कौन establish and administer educational institutions এটা आर्टिकल 30 रे अछि फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज तो এটা 2 and 4 अब 2 and 4 बी then there can be reasonable restriction and who can impose reasonable restriction on fundamental rights who can impose reasonable restriction किए fundamental right उपरे reasonable restriction आनी परिबो क्वेश्चन आंसर दे मेसेज रे कह मु कहूची तापरे ठीक अच्छी नेक्स्ट आसीबा में 7 नंबर क्वेश्चन ओके नेक्स्ट आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स दे एंजॉय इम्यूनिटीज अंडर ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कोटा ठीक है वेरी गुड इवनिंग प्रशांति गुड इवनिंग वेरी गुड कमिंग टू द सेशंस ठीक अच्छी एटा कौन हम कह प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एटा ठीक अच्छी प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट एबव लॉ ता माने नु कि से माने लॉ रो कारण नो वन इज एबव लॉ then does not apply on the करा जाएनी कारण they do not enjoy equal status before law like ordinary people and others they enjoy certain immunities मु क्वेश्चन कौन पचली who can impose reasonable restriction on the fundamental rights ताले इटा ठीक अछि but they enjoy immunity is not a law made by parliament but under the constitution article 361 बुझी परछु तो article 361 रे राष्ट्रपति और गवर्नर को स्पेशल इम्यूनिटीज दिया जाइछि एवं सेटिपे इटा भूल अछि दे एंजॉय इम्यूनिटी जे ठीक बट दे डू नॉट एंजॉय इम्यूनिटी मेड बाय लॉ दे आर मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पार्लियामेंट एक्ट करिनी सेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मेंशन अछि कोन इम्यूनिटीज ना दे कैन नॉट बी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड से जो कहूची डज नॉट अप्लाई ऑन द प्रेसिडेंट प्रिंसिपल ऑफ लॉ धर मु दोष कली मु अरेस्ट हेबी तू दोष कलु तू अरेस्ट हेबू तू गोटे क्राइम कलु तू भी अरेस्ट हेबू मु क्राइम कली मु अरेस्ट हेबी किंतु प्रेसिडेंट क्राइम कले संगे अरेस्ट हेबेनी सेति कह जाए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन द प्रेसिडेंट बट सीधा अलग कथा परे कौन हम किंतु से माने दे कैन नॉट बी अरेस्टेड दे कैन नॉट बी डिटेन्ड नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम ड्यूरिंग देयर टर्म they are not answerable to any court for their official act ସେମାନେ କୌଣସି କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇ ପାରିବନି ଡିଟେନ୍ କରାଇ ପାରିବନି କୌଣସି ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କରି ହବନି ତାଙ୍କ ଟର୍ମ ଭିତରେ ଟର୍ମରେ ଥିଲାବେଳେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ तो तेतिपई एटा दे एंजॉय इम्यूनिटीज ता ठीक थिला किंतु जेहेतु बाय पार्लियामेंट लिखि सेटा टिके हम भूल करे तापरे एटा हिजबो कोन ना ओनली वन ओनली डी बुझेला कि बुझेलानी yes parliament can impose reasonable restriction on fundamental rights okay on fundamental rights yes you are right Jyoti you are very absolutely right parliament
रेस्ट्रिक्शन करि परिबो एएसओ रे क्वेश्चन आसीतला की रेस्ट्रिक्ट करि परिबो की फंडामेंटल राइट ऊपर रेस्ट्रिक्शन आनी परिबो ना पार्लियामेंट आनिबो किंतु से रेस्ट्रिक्शन टा रिजनेबल कि नहीं किए डिसाइड करिबो हु कैन डिसाइड द रिजनेबलनेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट दैट इज सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करिबो बा हाई कोर्ट डिसाइड करिबो whether the restriction imposed on the fundamental rights are reasonable or not. नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो 8 नंबर फाइंड द करेक्ट आंसर. ओके आसीजा आम नेक्स्ट क्वेश्चन को 10 नंबर 10टा क्वेश्चन करिबा. फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन इंदिरा साहनी केस पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड पार्ट 3 मिनर्वा मिल केस प्रोसीड टू एस्टैब्लिश बाय लॉ आउ गोपालन केस आउ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड शंकरी प्रसाद केस कुड हैव यस एके गोपालन केस सेटा कौन सा होगा आंसर एटा मु करी थिल थरे बदे मझिरे लाने इंदिरा साहनी केस 1992 मिनर्वा मिल केस 1980 1950 और इटा 1950 शंकरी प्रसाद ओके तो एटा से जो अच्छी हमर कौन ये अच्छी हमर कौन शंकरी प्रसाद केस गोटे गला आ गोटे कौन है मिनर्वा मिल केस. इंदिरा साहनी केसटा हूँ कौन रिजर्वेशन केसटा एटा इंदिरा साहनी केसटा रिजर्वेशन केस इटा हमरो शंकरी प्रसाद 1951 इटा पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करि परिबो हिला. मिनर्वा मिल केस हला रिवाइवल ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो जुडिशियल रिव्यू को 42nd अमेंडमेंट रे काटी दिया जाइतिला बाटा को ओवरलुक कराइतिला सेटा को मिनर्वा मिल केस रे से अपहेल्ड करले एवं डिक्लेयर्ड एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एवं गोपालन केस हला प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तेनु ए हबो ए हला केते ए हला 3 ठीक अछि. बी रे कोन अछि बी रे अछि मिनर्वा मेस केस हला रिवाइवल B4 तापरे सी रे अछि गोपालन केस प्रोसीजर एस्टैब्लिश C2D1 A3 B4 D उरा से मन रखिबा टिके इंपोर्टेंट केसेस गुरा अच्छी. They are very important for upcoming preliminary examination. Kindly remember these points. So answer of A3 B4 C2 D1 match the following. ठीक अछि देखिबा हमें कोन अछि A3421 3421 3421 yes A 3421 ठीक है. आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 9 नंबर क्वेश्चन देखो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू राइट टू इक्वालिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी फॉर ऑल सेटा ठीक अछि. Equality माने no absolute equality. There may be there may be inequality in the on the basis of income and the basis of status or anything like that. So absolute तो किछि जिन सही परिबनी.
Principle of equal protection of law empowers the state to classify people for legitimate purposes. Legitimate purposes ପାଇଁ equal protection माने कौन? Equal protection माने एटा positive जिन्स, positive discriminations बा positive division रहिबो समाज रे. धर समाज रे हमें जो कहूचे माने स्वच्छल वर्ग, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप एरा कहीं रहिले प्लानिंग टा बैलेंस करा हबो. सेमान पे धर हमर सुभद्रा योजना दिया जाउची जो मन लोअर इनकम ग्रुप को दिया जिवो. तनु इक्वल प्रोटेक्शन माने इक्वल should be protected equally in equal circumstances. सेति पई जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टा स्टेट को एम्पावर करछि लेजिटिमेट क्लासिफिकेशन करिया पे, लेजिटिमेट पर्पसेस रे. लेजिटिमेट पर्पस माने उचित पर्पस, ठीक काम बा गोटे भलो उद्देश्य पई समाज रे विभाजीकरण करा जाय. जेमति हमें करछे लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, सो दैट सरकार कौन करिवो ना जो मन लोअर इनकम ग्रुप तांको सब्सिडी दबो, तांको विभिन्न प्रकार फाइनेंशियल असिस्टेंस दबो. जो माने हायर इनकम ग्रुप से माने अवॉइड हिजबे. धर सुभद्रा योजना हला सेटा कोन सेही मान को दिया गला, किंतु जो माने हायर इनकम ग्रुप हेले बा जो माने इनकम टैक्स दउछन ताको सुभद्रा योजना मिलिबो की? तो समाज रे एब्सोल्यूट इक्वालिटी के बेस परिबन. सेते विभाजीकरण दरकार. सेटा कोन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. जो आर्टिकल 14 रे जो दीटा कथा अछि कोन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ माने नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बिफोर लॉ, नो वन शैल बी डिनाइड लॉ. ठीक है, तो बोथ हबो इट, बोथ 1 and 2 बी, बोथ 1 and 2 बी. ठीक है. नेक्स्ट आसीबा question number 10. Which of the following are included in the definition of under article 12 of the Indian Constitutions? कोटा 12 of Indian Constitution रे अछि. आर्टिकल 12 रे जो डेफिनेशन अच्छी, आर्टिकल 12 रे जो स्टेट रो डेफिनेशन अच्छी सेतरे समस्ते जीवे जो माने सरकारी काम बा स्टेट रो सरकार रो काम करिवे से माने दे विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. इवन सुप्रीम कोर्ट कहिसंती जदि गोटे प्राइवेट बॉडी परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ द स्टेट देन इट विल आल्सो बी कंसीडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ठीक है. स्टेट रे एग्जीक्यूटिव जीवो, लेजिस्लेचर जीवो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जीवे, अर्थात ऑल हबो स्टेट माने एवरीबॉडी विल कम अंडर दैट. इवन जदि गोटे घरोई संस्था, प्राइवेट संस्था जदि सरकार रो काम करिवो से समय से स्टेट एटा काहे कुआ जाय? कारण स्टेट डेफिनेशन को आसिले जहा जहा सब कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्शन अछि सेबा सब मानियो पड़िवो. इट कैन नॉट वायोलेट फंडामेंटल राइट्स. ठीक अच्छे. सो से गुरा सब पई कराई छी. तो एटा हबो कोन ना कोन एटा 1 2 3 4 सब हबो डी ऑल डी हबो. गॉट इट? एवरीबॉडी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस, सुप्रीम जो हमर कोन सेटा रहला जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर. Judiciary does not come directly under the state as it is neutral to the state. It protects the state against unconstitutional distortion or any type of unconstitutional things. Then judiciary is not implied under the definition of state, but that is also a part of state. But with regards to definition of Article 12, judiciary is not mentioned. Remember that. ठीक है. So 1 2 3 4 अब. Next आसीबा 11 number. Which of the following cause provisions in the Constitution of India are associated with affirmative action?
ठीक है, व्हाट डू मीन बाय अफर्मेटिव एक्शन? व्हाट डू मीन बाय अफर्मेटिव एक्शन? इट जाने पड़ो अफर्मेटिव एक्शन माने कौन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव एक्शन? ठीक ठाक अच्छी क्वेश्चन, ठीक ठाक अच्छी पिलाने? ओके, अफर्मेटिव एक्शन माने कौन? Affirmative action माने protection of the interest of the disadvantaged sections. Protection of the interest of the disadvantaged section and provide social justice. Affirmative action goes to provide protection of the interest, special protection for the disadvantaged needy section of the people, and to provide social justice. It is affirmative action. ताले एथरे से को जी को आर्टिकल रे एसोसिएट होती अफर्मेटिव 15 रे अछि 15 रे कोन करा होची रिजर्वेशन रहउची सब 15 4 15 5 एगुरा सब कोन वुमेन चिल्ड्रन पई रिजर्वेशन स्पेशल प्रोविजन कथा कुआइची इडा जो हमरो एजुकेशनल रिजर्वेशन कथा कुआइची 15 रे तेनु सेटा सब हेरा होची अफर्मेटिव एक्शन. रिजर्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. बुझि परतो रिजर्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. तेणु 16 रे सेमती अफर्मेटिव एक्शन जीव कारण जो राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अच्छी से सब रिजर्वेशन दि जाऊनी 16(4) रे 16(5) रे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अच्छी हमर जो एससी एसटी रिजर्वेशन कथा कुआई वुमेन पई कुआई ठीक अच्छी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दैट इज नोन एज अफर्मेटिव एक्शन. Even promotion, in case of promotion also reservation is provided 16(4)(a ना कौन अच्छी ठीक अच्छी तो एगुरा सब अफर्मेटिव एक्शन किंतु 21 रे सेमती किछि नै तेनु एटा हबनी तेनु एटा कोन हबो 1 and 2 ओनली. बुझी परले तरा कोतरे अफर्मेटिव एक्शन बुझियला कि नै? यस 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 रश्मि रेखा यस यस वेरी गुड ठीक अच्छी. सो दैट इज नोन एज अफर्मेटिव एक्शन. हां तो अफर्मेटिव एक्शन माने कोन जोटा जो एक्शन टा दलित बा निष्पेषित बा निडी पुअर लोकंकर डेवलपमेंट पई बा एम्पावरमेंट पई विनियोग करा जाए बा इंप्लीमेंट करा जाए ताको अफर्मेटिव एक्शन कुआ जाए. यू कैन टेक रिजर्वेशन एज एन एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. रिलैक्सेशन ऑफ the provision of social security cases also is a thing. ठीक है. This is all about okay. नेक्स्ट आसीबा में तापरे क्वेश्चन नंबर 12 जे पढाइथिबा ताला 12 जे पढाइबा अछि. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन हेल्थ. जेमते हम एजुकेशन ऊपर बियरिंग गोटे गोटे क्वेश्चन करिचे गोटे एनवायरनमेंट और बियरिंग माने कोन का से तो रिलेटेड अछि. हेल्थ सहित संविधान रो को प्रोविजन टे रिलेटेड अछि सेटा से कहूची बस एती कथा तो कोन ठीक अच्छी. 10 शेड्यूल हेल्थ से तो किसी रिलेटेड ना सेटा एंटी डिफेक्शन लॉटा. 11 शेड्यूल टा जो अच्छी पंचायत रे से प्राइमरी हेल्थ गोटे सब्जेक्ट से 11th रे हां 11th रे तो 11th रे हबो डायरेक्टिव प्रिंसिपल रे अच्छी हेल्थ जो अच्छी हमरो कोन हेल्थ फैसिलिटीज जो अच्छी intoxication of drugs, ban on intoxicating drugs and drinks, secure health women children मानकर हेल्थ ऊपर अच्छी 39 रे अच्छी बहुत सारा जगह रे हेल्थ रो मेंशन अछि. तो डीपीएसपी टा जीव फंडामेंटल ड्यूटीज रे किछि नाही फंडामेंटल राइट्स रे भी किछि नाही
ठीक अच्छे 1 2 3 अच्छा 1 2 5 अच्छा फंडामेंटल राइट्स जो अच्छी फंडामेंटल राइट्स यू कैन सिक्योर फंडामेंटल राइट्स रे 21 अंडर रे राइट टू हेल्थ बेसिक हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट टू हेल्थ तेणु एटा तुम्हें एमती करि परिबो 1 to 5 करि परिबो ए फंडामेंटल राइट को नबा कथा कारण 21 as जूस तो हेल्थ ऊपर इंप्लिकेशन अच्छी तार तो 21 अच्छी तो एटा ए टाइप रो क्वेश्चन गुरा बेसी आछि का सहित किए बियरिंग माने कौन इम्पैक्ट अच्छी का सहित रिलेटेड अच्छी से जो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स गुरा ठीक अच्छी तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन हेल्थ ठीक अच्छी तो दैट इज देयर 1 to 5 ओके प्लान है तो दैट इज देयर बाकी जो पचारथिलु तो 32 रो क्लॉज गुरा जोटा क्लॉज 32 रो क्लॉज 1 रे जोटा आमे देखुचे क्लॉज 1 रे सेटा होची जने राइट टू मूव द कोर्ट जो रही राइट टू मूव द कोर्ट सेटा 32 क्लॉज 1 राइट टू मूव द कोर्ट जोटा रही ठीक अच्छे तापरे राइट टू इश्यू रिट्स गुरा जो मंडामस हला कोवारंट हला सेटा क्लॉज 2 क्लॉज 3 टा होची कोन ना सुप्रीम कोर्ट कोर्ट को देई परिबो अन्य कोर्ट को जो अधिकार गुरा अछि से गुरा सब देई परिबो सेटा क्लॉज 3 एवं क्लॉज 4 रे आर्टिकल 32 क्लॉज 4 रे the right to constitutional remedy cannot be suspended except under the law under the provision provided in the constitution माने जंती धर 358 रे अछि 359 रे अछि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर सस्पेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 20 and 21 व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड तेणु 32 रो क्लॉज 4 रे कुहाइछि कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी सस्पेंड हेई परिबो इन द मैनर एज इट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तमने संविधान रे जेंती उल्लेख अछि सेही भाव रे ही 32 सस्पेंड हो नले मन इच्छा सस्पेंड होबनी बुझियला तमने 32 रो क्लॉज 1 रे रहिला द राइट कोन राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट सेटा होची गुटे राइट 32 टा गोटे राइट जोटा गोटे कॉमन लोक को बा साधारण लोक गोटे आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट को नहीं जीवो an ordinary man or woman can move the supreme court under article 32 so that 32 रो clause 1 32 रो clause 2 रे रहिला तुमरो जो पांचटा reads that supreme court can issue reads like habeas corpus mandamus quoranto prohibition certiorari 32 रो clause 3 रे रहिला Supreme Court, the power to grant writs can be conferred any other court by parliament. एवं एपर्यंत कौनसी कोर्ट को दिया जाए नहीं केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रही एवं 32 रो क्लॉज 4 रे जोटा कहली सस्पेंशन ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बुझियला तो प्लान आज हमें 12टा क्वेश्चन डिस्कशन कले 12टा क्वेश्चन गुरा डिस्कशन कले आउरी क्वेश्चन अच्छी बट तुमको मु हेक्टिक करिया को चाहुनी जतिकिटा अच्छी सेतिकिटा भलसेटी देखो आउ जो क्वेश्चन अच्छी छोटो क्वेश्चन अच्छी कि और 13 टा देखिलो with reference to writs issued by the courts in India consider the following statements mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public body mandamus will not lie against a previous year paper company even though it may be a government company any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto yes eta hi paribo writ ta konosi gote loko ani paribo je jar problem houtibo sie nol jar problem no houtibo sie bi mandamus will not lie against a person unless it is interested with a public yes এটা ঠিক আছে গোটে প্রাইভেট বডি এগেইনস্ট রে মান্ডামস আসিবনি যদি সে সরকারি কাম ন করথিব যদি সরকারি কাম করথিব মান্ডামস আসিব মানে ধরা যাও গোটে স্কুল কু প্রাইভেট স্কুল কু দিয়াইছি যে সে পিলাঙ্কৰ রেজিস্ট্রেশন করিব বার্থ রেজিস্ট্রেশন গোটে এরিয়া রে করিব
एवं से कलानी ठीक टाइम रे ताल ता अगेंस्ट रे मैंडामस आसी गोटे एग्जांपल मु दउची त माने गोटे प्राइवेट संस्था अगेंस्ट रे मैंडामस केते बळे आसीबो ना जेते बळे से सरकारी काम करथिबो स्टेट रो काम करथिबो mandamus will not lie against a company even though it may be a government company नाही आसीबो एटा भूल अछि गवर्नमेंट कंपनी बा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हला माने mandamus आसीबो ठीक अछि ए पब्लिक एटा ठीक अछि त माने आंसर कोन हबो 1 and 3 ओनली ठीक अछि बिलन तर आंसर एतरे अछि मु देखै दउची आंसर बोते थिबो 1 and 3 सी ठीक अछि बिलाने तो आम 13 क्वेश्चन आज देखिले तो बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी काली डीपीएसपी रो अच्छी धीरे धीरे आम जाऊे बहुत सारा क्वेश्चन तो आम एक्सटेंसिवली डिस्कशन कले बहुत सारा टॉपिक ऊपर ज्योग्राफी इकोनॉमी करंट अफेयर हाँ एमती आडा 247 कंट्रीब्यूशन एथरक सक्सेसफुल कैंडिडेट को पाई निश्चित भाव में अधिक लगे रहो पे आमर लक्ष्य रहा ओपीएससी रु यूपीएससी आमर जे जर्नी रे आमे सामिल हबा जो माने सिविल रे कैरियर नबा को चाहूछ आराम से प्रिपरेशन कर भल से पढ़ मन पूरा ठंडा रखी पढ़ बिना कोनोसी टेंशन नियोनी धीरे 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 तुमको सब बुझा पड़ जिवो बुझी परिबो लगी रह दिन को 3-4 घंटा जमतिले लगी के रह 3 रु 4 कि 5 मैक्सिमम 5 घंटा खंडे दे 4 रु 5 घंटा दे आराम से पढ़ जो कॉन्सेप्ट ऊपर डाउट होची तुम आडा 247 ओपीएससी रे हो कि मते डायरेक्ट कांटेक्ट करि परिबो कथार्ता हे परिबो एथरे मेसेज दे परिबो यूट्यूब रे लिखला बेले मेसेज दे परिबो एठी देखा करि परिबो तो डिफरेंट टाइप रो सॉल्यूशन अछि केवल गोटे जिंसर अभाव रहिबो जदी तुमे इच्छा न करिवो जदी इच्छा न करिवो तुमे बा तुमे जदी तुमर आग्रह न रहिबो ताले कोनोसी शक्ति भी तुमको उत्साहित करि परिबो नाही से निजर आग्रह तैयारी कर गोटे जीवन गोटे लक्ष्य रख कि मुझे मत हबार अच्छी मोर जो सिविल सर्विस प्रिपेरेशन करिवार अच्छी मत गोटे आईएएस किंबा ओएस किंबा आईएएस बनवार अच्छी थरे लक्ष्य रखी दियो निश्चित भाव में सेटा तुमको भविष्य में साहाय्य कर ठीक है पिलाने तो विशिंग यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ अहेड ठीक अच्छे मे गॉड ब्लेस यू विथ मोर सक्सेस मोर हैप्पीनेस ओके एंड जॉइन अस एट एनी टाइम मोर तो 5टा बेले क्लास रहउची बाकी जोरा रहिची सब हमरो जो ये गुरा मु तो कहिची हमरो वारियर बैच जो लॉन्च हेची गुरा सब तो देखिछ और बहुत क्वेश्चन मु रखितली एरो देखेबी तो वारियर 2.0 जोटा अछि हमरो एपट देखउची वारियर 2.0 तो कथा मु कथा हेची तुम सहित वारियर 2.0 नहीं कि एटा तो स्टार्ट हेची नुआ बैच और 3.0 आरंभ होबो बाकी 9 आवर ओडिशा बैच भी आरंभ हेची गुरा तो कुहाउची तुमको 9 आवर ओडिशा बैच भी भलो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन ओडिशा पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी करंट अफेयर इकोलॉजी ऊपर अछि ठीक अछि गुरा सब लॉन्च हेची एवं सेटा तुमे भल से ताको जदी जोटा तुमे डिसाइड करूछ सेतरे जॉइन करि जाओ ठीक अछि बहुत हेल्पफुल हबो एटा तो गारंटी मु देबी कि जो जिंसटा तुमे एक्सपेक्ट करूछ जे मु ऑफलाइन रे जाइथिले सेटा पाई थांती एटा सेटी पाई परिबो कारण एथिरे बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन पई तुमको सुविधा रहइबो तुमे हमकु भेटी परिबो अन्य जोटी जोटी हमर ऑफिस अछि आईडी मार्केट भुवनेश्वर रे तेणु सीआरपी छकरू ये करिकी तेणु से तुम्हें आसीपर आम सहित कथा ही पार विभिन्न क्लास नोट उपर कथा ही पार एवं आंसर चेकिंग करई पार एवं प्रिलिम पर आमर आंसर राइटिंग सेशन आरंभ हो से जमती जॉइन कर बहुत नॉमिनल प्राइस तार तेणु जॉइन कर तुम्हें चाहिए आंसर लिखिक आनी मत देखई पार एठी तो सब प्रकार व्यवस्था रही केवल गोटे जिनसर अपेक्षा अच्छी कि तुम आग्रह उद्दीपन ही तुम भविष्य से जो इमारत तैयारी हो तो build your own imarat with the help of ADA 247 OPS. Thank you very much to all of you for being with me.